for MSME enterprises in India. I think something very unique. We'll get to learn from his experience as well. Kiran, is actually a fund partner with Dallas Venture Capital. And they are raising currently about 1,000 crores across 2 funds. They've invested across 27 startups. The team has done that and deployed around $40 million. And Kiran has prior experience of 2 decades with the large global organizations including Google, Dell, ET, Oneida, etc. He's also an alumnus of IIM Calcutta and Osmania University and College of Engineering, and an angel investor as well. So thank you so much. We have a very, very esteemed panel here. So let me start with Ajay. Thank you so much. I think you have been an inspiration for entrepreneurs, and I think you started selling computers when people didn't really understand the true value of computers at that time. I think you started from there and you created a giant in HCL. So, aap ye bataiye, I think, how did you do it? I think coming from a town like Jabalpur and creating a company which of the global scale. तो आप थोड़ा share करिए हमारे साथ कि how does an entrepreneur coming from that background go to that scale? Thank you. Can you hear me, everybody at the back? Yes. Yeah. So basically, Jabalpur शायद tier 3 में आता हो, 2 में भी नहीं आता शायद. So it is not important कि tier 2 है, tier 3 है, tier 1 है. I think सबसे बड़ी बात होती है aspiration. अगर आपके अंदर aspiration है किसी चीज के लिए, तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं. और मेरे जो टीचर और गुरु थे डॉक्टर सीके प्रहलाद, वो एक चीज हमेशा बताया करते थे कि A is greater than R. So if you have the aspiration, resources will happen. Okay? So when we talk about funding, for example, you should never worry about funding. You should first think that you want to do something and you have the aspiration to do it. If you have that aspiration, everything falls in place. Okay? So that's point 1. I think point 2 is that coming from Jabalpur, it taught me the value of being very, very frugal when we started our business. क्योंकि भाई छोटे शहर से आए हैं, पैसा कम है, मेरे फादर IAS में थे, MP में, तो क्या पैसे होंगे हमारे घर में, मिडिल क्लास. सो उस तरह से अगर आप शुरू करें और फ्रूगल शुरू करें तो आपको एक सक्सेस मिलती है. और सबसे बड़ी ये बात है कि अगर आप छोटे शहर से आए हैं तो आप यू वर्क thrice as hard as somebody coming from tier 1, and that's really what makes success. ये बात आपकी मैं बिल्कुल सहमत करता हूँ आपकी बात से. इनफैक्ट IV कैप फंड हम मैनेज करते हैं. आई एम द फाउंडर ऑफ IV कैप वेंचर्स. हम लोग 4,000 करोड़ मैनेज करते हैं. और हमारी एक कंपनी इंदौर में भी है, फिंग पे. प्रत्युष, कैन यू रेज योर हैंड? And Pratyush is actually from Indore, and he's exactly the entrepreneur that you defined. Very frugal, very organized, and has really huge, big aspirations. So really proud of you, Pratyush. Let me go to Jaideep Mehta. Jaideep, would love to hear from you because you've been investing in startups, and I think people would love to hear from you, from your perspective, what are the different models of funding that an entrepreneur should look at? Because especially keep in mind, काफी सारे entrepreneurs हैं यहाँ पे जो funding ढूंढ रहे हैं. तो क्या, what would you like to tell them? Thank you, sir. Firstly, बहुत सालों से इंदौर आ रहा हूँ. 56 दुकान और सराफा का तो मुझे पता था, लेकिन इतना जबरदस्त स्टार्टअप कॉन्क्लेव इंदौर में हो सकता है सोच भी नहीं सकता था. सो माय कांग्रेचुलेशंस
to all the people here and the government. ऐसा कॉन्फ्रेंस, बहुत कॉन्फ्रेंसेस देखे सर, लेकिन आई थिंक अजय जी आपने शायद मेरे से भी ज़्यादा देखे होंगे. इतना वाइब्रेंट कॉन्फ्रेंस बहुत कम देखने को मिला है. मैं तो एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव से बोलूँगा ये. इन टर्म्स ऑफ फंडिंग ऑप्शंस, आज की तारीख में इकोसिस्टम काफ़ी इवॉल्व होता जा रहा है सर. सो अब अगर आप HCL के ज़माने की बात करेंगे तो फैमिली की सेविंग्स और जुगाड़ करके कुछ लोगों को काम शुरू करना पड़ता था. एंड वाइल इट वाज वेरी गुड, लेकिन उसका एक कॉस्ट भी है. कॉस्ट ये है कि स्केल करने के लिए बहुत टाइम लगता था, क्योंकि स्केलिंग के लिए कैपिटल तो चाहिए, चाहे 1970 हो चाहे 2020 हो. आज की तारीख में फाउंडर्स के पास एक काफ़ी ऑप्शंस का एक एरे है. तो काफ़ी एंजल इन्वेस्टर्स हैं, इंदौर में भी एंजल इन्वेस्टर्स हैं, IAN जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं. और आज की तारीख में जो एंजल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं वो सिर्फ पैसा ही नहीं देते. जैसे IAN का जो एक मकसद है वो है मनी, मेंटरशिप, मार्केट एक्सेस. यानी पैसा तो आपको देंगे ही अगर आपकी वेंचर को हमें प्रॉमिस दिखा, लेकिन उसके अलावा जो हमारे 500 प्लस मेंबर हैं वो एक्टिवली आपके साथ जुड़ के आपकी मेंटरिंग भी करते हैं. जो लीड एंजल होते हैं वो आपके बोर्ड पे आते हैं, बोर्ड एडवाइजर रहते हैं, और वो लोग कई एक्सपर्ट्स को फिर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से एक अवेलेबिलिटी क्रिएट हो जाती है एक्सपर्ट्स की आपके लिए. मार्केट एक्सेस मायने कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक B2B, अभी पिछले सेशन में मैंने देखा वो SaaS कंपनी की बात कर रहे थे, तो कई ऐसे एंजल इन्वेस्टर्स हैं जो एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में बड़ी बड़ी कंपनियों में, तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं, आपका प्रोडक्ट को कहीं इंट्रोड्यूस करा सकते हैं. तो फंडिंग एक है इक्विटी बेस्ड. दूसरी, आजकल आप लोगों ने शायद देखा हो, एक रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग का नया दौर शुरू हुआ है. स्पेशली जो अगर आप कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं. मेरा एक बहुत घनिष्ठ मित्र अनुराग जैन, उन्होंने क्लब करके एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है, और काफ़ी सारे वैसे हैं जो कंज्यूमर कंपनीज के लिए रेवेन्यू के बेसिस पे एक हाइब्रिड सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया है कि वो रिस्क भी लेते हैं लेकिन आपको डाइल्यूट भी नहीं करते. तो आपकी अगर ग्रोथ बेटर रही तो उनका भी फायदा है, ग्रोथ नहीं हुई तो उनका भी नुकसान है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप फाउंडर के हिसाब से आपकी इक्विटी डाइल्यूट नहीं होती. फिर वेंचर डेट के भी अब ऑप्शंस खड़े हो गए हैं. तो पहले जो सिर्फ बैंक क्रेडिट होता था, किसी ने सवाल पूछा था कि भाई हमारे पास कोलैटरल नहीं है तो हम बैंक से कैसे क्रेडिट लें. बिल्कुल सही है, और बैंक का काम ही नहीं है आपको फंड करना, क्योंकि अगर किसी बैंक मैनेजर ने बिना कोलैटरल के आपको लोन दे दिया तो उनकी पिटाई हो जाएगी बाद में. लेकिन काफी वेंचर डेट फंड्स है जो आपको फंड कर देंगे. तो इस हिसाब से काफी सारे अब नए नए रास्ते खुल गए हैं. और मैं यही कहूंगा फाउंडर्स को कि आप जो भी आपको फंडिंग जिस स्टेज पे भी आपकी कंपनी हो, आपको सारे ऑप्शंस एक बार परख लेने चाहिए बिफोर आप एक डिसीजन लें. मैं मनोज जी, मैं आपके पास आता हूँ एक मिनट. आई थिंक बिकॉज दिस इज अ वेरी नेचुरल थिंग, आई वुड लाइक टू गेट संदीप, बिकॉज आई थिंक यू मेंशन्ड अबाउट ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ फाइनेंसिंग. संदीप, आप बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म मैनेज करते हैं, एंड आई थिंक थोड़ा प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए, और ऑल्सो व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव मीन्स फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव अवेलेबल टू एंटरप्रेन्योर्स. वर्किंग कैपिटल के लिए उनको क्या क्या पॉसिबल ऑप्शंस उनके लिए अवेलेबल हैं? Sure, Vikram. Thank you. Before I start, must compliment the way Indore the whole administrative team has organized this. This is vibrant. I mean, I haven't seen a webinar or a seminar like this of this scale. This scale seminar I have seen in Singapore or in Dubai. And this scale seminar in Indore, amazing. My eyes are opened. Must congratulate complete team. Absolutely. Coming back to the question, एक स्टार्टअप के बहुत सारे फेजेस होते हैं. आपने स्टार्ट किया कैपिटल के बड़े सारे मेथडोलॉजीज जयदीप जी ने आपको बताए हैं. नाउ अब आप स्टार्टअप स्टार्ट हो गया, आपने अपनी कस्टमर को बिलिंग स्टार्ट कर दी है. अब आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट शुरू हो जाती हैं, और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स आपके इंटरनल कैपिटल से ही स्टार्टिंग में फीड होती हैं. बैंक आपको वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करता है, बट उसके लिए उसको कोलैटरल चाहिए, प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल्स चाहिए,
और लिमिटेड वर्किंग कैपिटल प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस देख के आपको प्रोवाइड करता है, बिकॉज उसको उसके नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं जो बैंकिंग नॉर्म्स हैं. अब पॉइंट आता है कि फिर वर्किंग कैपिटल में आपकी अपनी पर्सनल कैपिटल जो कंपनी की कैपिटल है वो डिप्लॉय होनी शुरू हो जाती है, जिसमें एवरेज आउटस्टैंडिंग इंडिया में हमने जो देखा है वो 90 डेज से कम नहीं है किसी भी बिजनेस में. सो अगर आपकी स्टार्टिंग फेज में जब आप होते हो तो आप 1 करोड़ टू 5 करोड़ टू 10 करोड़ इस रेंज में आपका स्टार्टअप की टर्नओवर चल रही होती है. और अगर 90 डेज की आउटस्टैंडिंग है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम तो एवरेज आपका 1 करोड़ से 3 करोड़ रुपया मार्केट में आउटस्टैंडिंग में रहता है. नाउ दिस इज वेयर a platform like what we are suggesting is M1xchange, which is a TREDS platform, Trade Receivable Discounting System by RBI. This is regulated by RBI. जहाँ पे आप अपना इनवॉइस रिसीवेबल जो होता है वो आप डिजिटली प्लेटफॉर्म पे डाल देते हैं. आपका कस्टमर उस इनवॉइस को अप्रूव कर देता है कि इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है. उसके बाद बैंक्स आके, इंडिया में 45 बैंक्स हैं इस वक्त प्लेटफॉर्म पे, जो आके उसके की डिस्काउंटिंग के लिए बिड मारते हैं बेस्ट प्राइस पे. सो देयरफॉर आपको बेस्ट प्राइस मिलती है. आपको मल्टीपल बैंक्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है. विद इन योर ऑफिस आप डिजिटली फ़ोन के थ्रू इनवॉइस डालते हो और आप विद इन प्रॉबेबली 30 मिनट्स आपको बिड्स नज़र आनी शुरू हो जाती हैं. एंड शाम को 9 बजे तक इस प्लेटफॉर्म पे जितनी भी बिड्स डलती हैं आप उसमें से जो भी बेस्ट बिड एक्सेप्ट करते हो अगले दिन 8 से 11 के बीच में आपके अकाउंट में क्रेडिट ऑटोमेटिकली आ जाता है. सो दिस काइंड ऑफ ऑल्टरनेट मीन्स ऑफ फाइनेंस इंडिया में. इससे पहले सुबह एक वेब सेमिनार में आई वाज लिसनिंग, समबडी वाज सेइंग इंडिया में बिल डिस्काउंटिंग नहीं होती है. तो मेथोडोलॉजीज पिछले 3 साल में चेंज हो गई हैं. बिल डिस्काउंटिंग होती है. 3 ट्रेड्स प्लेटफॉर्म हैं. तीनों ट्रेड्स प्लेटफॉर्म ने 76,000 करोड़ की एसएमई की बिल डिस्काउंटिंग करी है, सिर्फ एसएमई की बिल डिस्काउंटिंग. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस रेट पे होती है, कॉस्ट ऑफ फंड्स क्या हैं जिस पे आपको ये इनवॉइस डिस्काउंटिंग हो रही है, विच इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एसएमई और एनी स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन. एवरेज रेट जिस पे इस प्लेटफॉर्म पे जो इस वक्त रेट चल रहा है वो रेंज कर रहा है as low as 4% per annum and as high as 11% per annum. इस रेंज में डिस्काउंटिंग हो रही है. अब किसी एसएमई को या किसी स्टार्टअप को 4% 5% पे ब्याज पे पैसा मिलना इम्पॉसिबल है. मैंने भी नहीं सोचा था, बट ये हुआ क्योंकि बिडिंग हुई. बिडिंग मैकेनिज्म में बैंक्स फॉरवर्ड आए और उन्होंने कंपटीशन में इस 4-5% पे डिस्काउंटिंग हुई है और आज भी हो रही है. एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि जो कस्टमर है आपका वो कितना स्ट्रांग है वो इस प्लेटफॉर्म पे देखा जा रहा है. ना आपकी बैलेंस शीट देखते हैं, ना आपसे कोलैटरल मांगते हैं, ना आपका सिबिल स्कोर देखते हैं, ना आपका लॉस देखते हैं, ना प्रॉफिट देखते हैं. आपके कस्टमर की स्ट्रेंथ देखते हैं. सो अगर आपका कस्टमर लेट्स से एज बिग अ कंपनी एज HCL है तो 4-5% पे डिस्काउंटिंग हो जाएगी. और अगर आपका कस्टमर मीडियम साइज्ड कंपनी है, 500 करोड़ की कंपनी है, 200 करोड़ की कंपनी है, तो 8-9% पे डिस्काउंटिंग हो जाएगी. सो इस प्रोसेस से आप अपने बिजनेस को स्ट्रेंथन कर रहे हो, रिस्क खत्म कर रहे हो अपनी वर्किंग कैपिटल का, बिकॉज आपको कलेक्शन नहीं करनी है. अगर अब जब आपके कस्टमर ने पेमेंट देनी है वो हम लेके बैंक को वापस कर देते हैं. सो आपका रिस्क खत्म हो गया. 4-5-6-7-8% पे पैसा मिल गया जो आपको अपने क्रेडेंशियल्स पे शायद कभी नहीं मिलेगा. So consider these alternate means of finance along with the equity capital to further accelerate your business. That's all I would say. That's great. Manoj, you've been, coming to Indore. You've been operating out of Indore. आप यहाँ पे I think एक एंजल नेटवर्क भी सेटअप करने की सोच रहे हैं, राइट? तो आप थोड़ा बताइए उसके बारे में कि आप how are you thinking of this entire plan? What kind of angel investment are you thinking in Indore? So let me just congratulate the organizers because the kind of energy which is I'm seeing, जो energy इस hall में है और इस पूरे venue में है, I want to give a big round of applause for all the organizers for doing this. और जैसे चौधरी साहब ने बताया, अजय चौधरी साहब ने, मेरा भी कनेक्शन इंदौर से है. I started my career from Indore 30 years back and traveled
across India. Somewhere Indore, I always say it's my first love. Although I'm not from Indore, I am from UP, but have a long-term plan to settle down here. मैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी चलाता हूँ, श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस. It's a part of Shriram Group of Chennai, where we are the largest truck finance company of India, Shriram Transport Finance, largest two-wheeler finance company, Shriram City Union Finance. And Shriram की अगर आप story देखें, तो Shriram की story is also, if you see, it's always funded by the various private equity partners. If you see the transformation of the whole group, 40 साल पहले this group started with only 50,000 rupees capital. And today, it's one of the largest financial service conglomerate after HDFC and ICICI. And once this merger of both Shriram Transport and Shriram City Union Finance happens, then we'll probably the biggest funding company, the biggest finance company of India. But what is the model of Shriram is we fund to common man. And I think from last 15 saal se. And I also represent a common man because my dad was not IAS officer, sir. My dad was a clerk in a cantonment board. And I come from a very small family. I started my career with 3,000 rupees in Indore city, 30 years back. So I have seen the complete life cycle. And somewhere it's there in my mind to give back to the state and to the city who has given me so much. Now coming back on angel investing or setting up an investor club, since last 30 years I have worked in the finance. Initial 10 years I was working for various non-banking finance companies like Tata's and 20th Century. Last 20 years, since the insurance sector got open for the private sector, I have served for companies like HDFC. And from last 15 years, I said I'm with Shriram, and I'm also the partner in Shriram Group. And personally, I have invested in a lot of angel groups. I'm a very active member of Chennai Angel. And when I look back here, there are angel groups are there in Indore, but not to the tune of like Bombay Angels or Delhi Angel or Chennai Angel for that matter. So what plan I have, or I think eminent speakers has already spoken, सबसे बड़ी जो दिक्कत है tier 2, tier 3 टाउन में बहुत आइडियाज़ हैं, बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं. आई कैन लुक माई ओन जर्नी. जब मैं बॉम्बे गया तो मेरे को लगा मैं इतनी मेहनत करता हूँ बिकॉज आई वॉज नॉट हैविंग एनी चॉइस, बिकॉज घर वापस जाना नहीं चाहता था. सो दैट एंटरप्रेन्योरशिप, दैट हार्ड वर्किंग इज देयर, बट हाउ यू कैन पोजिशन योर सेल्फ, हाउ यू कैन शो योर सेल्फ. And for that, I think the kind of platforms now which is available are immense. But before you go there, my own experience, what I can say, as an investor, what somebody looks, कि आपका idea बहुत अच्छा है, आप कोई अच्छा problem solve करने वाले हैं. Of course, scalability and all that will also come, but उसके पहले आपने अपना पैसा कितना लगाया. Because 30 years, I have worked in the finance industry and now working in insurance and managing the policyholder fund. And as I said, the Shriram model is we serve to the common man. There are 23 life insurance companies in India. After LIC, we are the probably only company where the average ticket, average premium per policy is only 15,000 rupees, where most of the private sector company like HDFC, ICICI, they serve to the top man. The average ticket size there is almost 1 lakh. Similarly, in financing, if you see, Shriram Group fund every month 5 lakh trucks. We have funded 1 crore two-wheelers. But we fund to the common man. So the pain of a common man, I understand, and it has ingredients. But what I'm saying is, when you are starting, any investor who comes and see आपका अपना पैसा कितना लगा है, वो बहुत ज़रूरी है. आपने अपना पैसा नहीं लगाया and then you are going for a funding, I think you'll get a funding, but then that's needed. Second, I will suggest once you reach to some stage, then there's no harm in taking money from your friends and relatives. This may sound very traditional when the high-tech platform people are here, but what I'm saying is do that. Once you have a stable and you are getting some cash flows,
profit may not be there, your idea is great, then you can reach out to angel investors. And I was hearing the previous session, somebody was talking कि angel investors free में service नहीं करते हैं, 15% तो उनको ऐसे ही मिल जाता है, स्टॉक मार्केट में मिल जाएगा, 12% मिल जाएगा. Angel investors are looking 25%, 30%, 40%. So once you get exhausted from all that, then come to the angel investors. And there I have a plan or I have a dream. If I can set up an Indore angel investor group, and I'm sure you all know, Indore is known for entrepreneurs and investors. Even if you see the top 10 cities of the wealthiest investors, I think a couple of them figures from Indore. I know a couple of mutual fund companies, they run an investor camp and they come here and there are large investors. There are other, local Indori always says, in this market, the real estate market in Indore is not run by the users, end users. It's always an investor base. So investors are here. Only thing we have to channelize. Great ideas are there. Funding arrangement will definitely be there. At a personal level, I have invested and my experience is quite good. Thank you. No, that's great. I think entrepreneurs आपकी ये बात सुन के बहुत खुश होंगे क्योंकि to get funding support at very early stage is very important. एक और खास बात है इंदौर में. There is only one city in India which has both an IIT and an IIM in the same city. Right, so that's in Indore, which is actually very unique to Indore, and therefore the talent, local talent, which is available here, is amazing. Kiran, you run a VC fund, and आप थोड़ा बताइए कि when you look at investing opportunities, how do you approach startups from tier 2, tier 3 towns? Do you have a defined strategy that you'll go after tier 2, tier 3 towns, or do you look at them as they come to you? So how do you look at tier 2, tier 3 towns? We are primarily, before start off, I think I should compliment this entire team for the very vibrant session that they have organized. Right from the moment I was entering the venue, I can feel the vibrations and probably one of the best ones which has been organized. And this shows that Indore is all set to take off. And it's probably another 5 years down the line when we see, I'm sure Indore would definitely rank among one of the best angel investment ecosystems across the country. Congratulations, guys. Now, coming back to your question, we don't specifically target tier 2, tier 3 cities. We look at an idea, we look at a business, but I'm very happy to say that probably about a couple of years back, but we may have been a little doubtful about investing in a tier 2, tier 3 city, particularly coming from the fact that we invest only in enterprise technology startups whose big businesses, whose primary clientele lies in bigger cities. But very happy to say, in the last couple of years, from our India fund itself, we have invested in a company which in Chandigarh, which is into an anti-money laundering solution. So great idea, great people. We went ahead and invested. From our US fund also, we invested in a company which is in Minneapolis, which is again a tier 2 city in US. What has changed? Primarily one, connectivity across the country has improved. Today I'm based out of Hyderabad, but I can directly fly to 70 different cities, right? Second, as Ajay ji mentioned at the beginning of his talk, the money gets stretched a lot more in a tier 2, tier 3 city. The frugality is much more. So the valuations are much better. So it can be a win-win solution, both for us and also for the startup. Third, people from tier 2, tier 3 cities tend to stick around much longer. So the team is much more stable. So if you have an idea, if you have a defined set of customers, of course, we come in a little late. We feed off from people like Mr. Manoj and from Jaideep. We come in a little late, but whenever there is a great idea with a few customers, we definitely are looking at investing in tier 2, tier 3 cities, and we definitely have a preference for that, for the reasons I stated. As Jaideep was saying, when we look at a company, we look at, hey, how can we help this company grow? It is just not a pure financial play.
even as part of our due diligence, we look at opportunities. If we have the capability within ourselves to help this company, this startup get customers, if we don't do that, we don't invest. And it really doesn't matter where the startup is operating from, till we come in as partners and we have the capability to help do some amount of market making. So with all these factors, I think, well, as I said, we are not exclusively going out, reaching out to tier 2, tier 3 cities, but we definitely are open to investing, and we are more than welcoming companies which are starting in tier 2, tier 3 cities. So I'll start taking questions from the audience as well, but while audience can start thinking of their questions, I'll have one more question here, and Ajay, I'll come back to you. When you started at that time, technology itself was so new, right? I mean, लोगों को यही समझाने में आपको मुश्किल होती होगी कि कंप्यूटर क्यों यूज़ करना चाहिए, right? So I think from that time to now, you are guiding startups even today. हम लोग, you and I also sit on this board of Electropreneur Park for hardware startups. तो आपने ये पूरा एक जर्नी देखा है, तो entrepreneurs would love to hear from you कि how things have changed over time, and especially from the government perspective. If you look at the government of Madhya Pradesh, any suggestions that you think government should consider when they think of startup ecosystem? So actually, when we started HCL, I mean, as I mentioned, probably we are the largest startup of MP. Okay, because I don't think there's any startup even $1 billion. We are $10 billion. So I think that's putting that aside. What that really shows, as I said, is that it's all possible. But when we started, there was no concept of VCs, there was no concept of angels. The only way you could get some money was from the government. That is going to a bank. And that was very tough. It is close to impossible. But somehow, I think we managed to get a very small line from Syndicate Bank. And originally, we started with a trading company, and we were looking for a license. In those days, if you wanted to set up a computer company in India, you needed a license. So we didn't have a license, and we were a startup. So what did we do? We started creating cash flow through a negative cash flow model. And that's something that you may want to look at. What we used to do was that we would buy our calculators from a company called Televista. We will take credit of 60 days. We'll tell our salesmen, sell everything within 15 days, collect within 15 days. So you had 45 days of cash flow available. That whole concept of negative cash flow is something that Dell talked about 30 years later. We were doing it in 1975. Now, so that's really what it teaches you, how to actually manage money. And you talked about cash flow being more important than profit. I think that's very critical. And that's really how HCL succeeded. We worked on the whole model of cash flow. Our first computer, you'll be surprised, was 3,84,000 rupees. Okay? It was an 8-bit microprocessor-based computer. It was 18 times the price of an ambassador car then. All right. So now, you are actually creating a category. You are trying to create people to understand why they need a computer. And you had to therefore look at what the myths were at that time. The myth was computer is very expensive, computer is very difficult to use. So what did we do? We came out with a campaign which said, even a typist can operate. And we also created the country's first EMI model by going to IDBI Bank and tying up with them and offering EMI on our 3,84,000 product, where the initial investment was 50,000 rupees. For a product which is probably 1/100th of your phone today. So, that's how you create markets. And if you actually look at your product, and I think what is very interesting that I see in the new startup policy, I was sent an executive brief of the policy this morning, and I found that there is a specific mention of product-based companies to be created in MP.
And I think that's a wonderful way to look at it, because enough has been done. I'm sorry to say so, I come from a huge software company, but I think software is done and dusted. Time has come for us to look at products. Time has come for us to look at electronics. Time has come for us to design. And the amount of opportunities available for startups today in creating products are outstanding. I mean, that kind of benefits that central government is providing, state governments are providing, are immense. And you and me have been participating in something called the Electropreneur Park in Delhi city. This Electropreneur Park is 100% for products, 100% for hardware, created last 6 years ago. It's created 50 products and 51 patents, right? And they got funded. So I think what is very interesting is that I think Madhya Pradesh should start to look at, and especially Indoris who are very, very entrepreneurial, please start to look at product companies, because that is where the future is. Because today, if you look at the most advanced designs in hardware, let's say you do VLSI design. I mean, a lot of institutes like IITs are providing courses in VLSI design. People can actually work towards designing a product. What does the central government do? For fabless companies who design VLSI chips in India, 50% of the design is funded by the central government. So I think these kind of incentives that are coming around from central government and state governments is something where I would like to draw the attention of startups. Don't do things that have been done before. Do something totally different. And if you can actually go about creating a category, then you can be exceedingly successful. And I'll give you one last example if you have the time. Do you have the time? Yeah, please. One quick example. 2 years ago, when COVID hit India, the Prime Minister said, we must do something on our own, totally Atmanirbhar. A bunch of us, 20 of us got together and started to work with a startup from IIT Kanpur, who were actually in the business of making product to clean solar panels. They pivoted to creating a ventilator. 20 of us sat for 2 hours a day from 12 p.m. for 90 days, and we helped them create a ventilator, world-class ventilator. In 2 years, this company, this financial year, closed their numbers profitably with 80 crores of revenue. So, you know, they had nothing. They didn't know what a ventilator looked like. वो जाके एक वो फिश टैंक से एक मोटर ले आए और अपना जो इलेक्ट्रॉनिक का मदरबोर्ड था उसको उठाया, 3-4 ऑन द शेल्फ प्रोडक्ट्स को लेके उन्होंने टेम्पररी प्रोडक्ट बना के हमको दिखा दिया और बोला कि ये दिस विल बी द बिगिनिंग ऑफ आवर प्रोडक्ट. एंड देन इन 90 days we had a full blown product. So under pressure, what country can do, what startups can do is quite amazing. And in Totally HCL, we believe that if you put people under pressure, they perform better. Totally agree. No, thanks for that. Jaideep, I think you wanted to add to that? Just a limited point I wanted to just build upon what Ajay sir had said. You know, this concept of hardware, I think I just want to extend it further for the benefit of the audience. अगर आप आज देखेंगे, and the most prominent example which all of us read about every day is the automotive industry. आज की तारीख में आप कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो, वो एक कंप्यूटर बन चुका है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स घुस चुके हैं, उसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेयर्स बढ़ते चले जाएंगे, वो कनेक्टेड होके रहेगा. आज की तारीख में अपन यहाँ बैठे हैं, पूरे हॉल में ये पैनल डिस्कशन टेलीकास्ट हो रहा है, शायद इंटरनेट पे भी जा रहा हो. कल हम गाड़ी में बैठेंगे, आज भी वो MG की गाड़ी आती है, वो बोलते ही ये इंटरनेट इनसाइड. आप सोच सकते हैं गाड़ी के पीछे स्टिकर लगाओ इंटरनेट इनसाइड, मैं कहता था फ्रेश एयर आउटसाइड. तो मैं सिर्फ ये एक्सटेंड ये करना चाहूँगा कि फ्रॉम अ इंडिया पर्सपेक्टिव,
from MP perspective, from Indore perspective, जहाँ पे भी एक इंडस्ट्रियल बेल्ट है, देवास, पीतमपुर, दिल्ली के आसपास, कहीं भी, हर एक एंटरप्रेन्योर, हर एक इंडस्ट्रियलिस्ट को एक इलेक्ट्रॉनिक्स की कैपेबिलिटी बनाना बहुत जरूरी है. वो कुछ भी बना रहे हो, वो दिन दूर नहीं है जब उनके प्रोडक्ट में भी किसी ना किसी तरह एक इलेक्ट्रॉनिक्स का डायमेंशन आ जाएगा. और वो अगर ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जैसे कि आप फर्ज करिए सोयाबीन ऑयल बना रहे हैं, तो वहां तो इलेक्ट्रॉनिक्स घुस नहीं सकते हैं होपफुली, लेकिन उनकी फैक्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक्स जरूर काम आएंगे, स्मार्ट मशीन्स जरूर काम आएंगी, उनकी एफिशिएंसी जरूर बढ़ेगी, सप्लाई चेन में कनेक्टेड ट्रक्स जरूर जाएंगी. तो मैं हर एक एंटरप्रेन्योर से यही दरख्वास्त करूंगा कि वो एक हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स और कनेक्टिविटी का एक अलग सा नजरिया आगे जाते हुए अडॉप्ट करें. I know we can continue to have this very interesting discussion, but let me take a few questions since we are running out of time. So we'll take a few questions from the audience. Any questions? Yeah. Is there a mic that we can give? The mic, the thing, please. Sir, first of all, thank you so much for the wonderful session and knowledge. It's been very useful. My startup is the Paris Jalwayu Samjhauta that government did on 2015, where 50% of the electricity generated by the country will be from the non-fossil resources. So for that, there is a PM Kusum Yojana in the MP. That's a pilot project of 300 megawatt. I have a 4 megawatt project, which costs around 20 crore. We are struggling for the fund. We have been told when we registered the startup that seed fund is there, fund of funds for there, that is AIF, and sustainable fund is there, and the loan from bank. But the bank is giving collateral free loan 70%, but 30% margin money is the problem, and we are struggling. And there are many farmers who are struggling. They have a land, they have a PPA, they have a letter of award from Madhya Pradesh Urja Vikas Nigam, they have a 25 years buying a fixed tariff 3 rupee per unit, but what should we do? We are lost actually. So we have a problem of funding and we need help and support. So anybody wants to take that? I think this is a very specific question with a specific issue. What our panelists are suggesting that we'll take this question offline. Sure. After this. And give me 1 minute more to add that it's a capital intensive project without any input cost because nobody is taxing sun yet, and no processing cost because it's a static only panel and structure is there, and no sales and marketing cost because the 25 years. So we'll discuss this, I think, the offline. Any other question? Yeah, please. Hello. Yeah. So, sir, I wanted to ask, what's the deciding factor for any business to decide if it should raise the money via bank or if it should raise the money via equity, via angel investors? I own a startup, sir, wherein my brother is always of the opinion that maybe we should raise the money via angel investor because our idea will get more refined, will get a more mentorship. But I am of the opinion that why do we want to, dilute our equity if we have enough working capital? So that's always a kind of a dilemma I am in. Yeah. Kiran. So earlier, there were multiples. Mr. Jaideep talked about multiple avenues of funding. Now the challenge with banks is most of the banks do not have the capability to evaluate the new age businesses. While there are multiple schemes, even collateral-free schemes for small and medium MSMEs, but most of them don't have the capability to evaluate these businesses. And secondly, with equity, you are not just getting money, you are also getting mentorship, you are also getting friends who can help you make markets. So it's not just one dimension. Whether you'll go for venture debt, or equity is something, a decision that you should take. But finally, it's just not money, but it's much more which is coming across. Actually, what I would like to suggest to you is that stop worrying about giving up equity. Okay? This whole business of saying I want to own 100% of the company is history.
How much does Narayan Murthy own of HCL, of Infosys? How much do I own of HCL? All right? Couple of percentage points. It's irrelevant. Because what valuation you create for future is what becomes relevant. So that's point number one. Point number two, if you know what you are doing and you have enough people around you who are able to mentor you and guide you and advise you, and you have advisors and mentors, and you can bootstrap yourself with your own funds, you don't need to look for angel funding. Okay? If you are confident. But if you're not confident and you do not have mentors, advisors, the mentor and advisors will not just tell you about your business model, they will also help you get you connects. So if you are a B2B company and you want to go and sell your product to an HCL or a HUL, these people will provide you the connects which no one around you will be able to provide. So I think you need to evaluate your decision based on these issues. Don't just stop worrying about, whether I own 100% or 2%. It's completely irrelevant. In the beginning, it is totally irrelevant. Because if, for example, an angel group takes 20% of your equity, but puts two very experienced people on your board and gives you connects through 500 or other people from the angel group, I mean, you will not get that for any amount of money that you want to pay. So think like that. Okay? Right, sir, got it. Thank you very much. Yeah, one additional point for you. If your business is making money or not, and when you're borrowing, what terms are you borrowing at? If your cash flow is positive, then only you can think of taking a bank loan. Otherwise, that repayment terms can put you into a jeopardy at some stage. So be careful about it. Hello. Okay. Good afternoon, everyone. This is M1xchange, MD of V Nutrition Company. My journey is very simple. I was just sitting at my hometown in first lockdown period, and hopefully most of the members have thought something being idle at the home. Okay. So what I observe, I am from Sagar, sir. I heard you are from Jabalpur. Yeah. So what I heard, like in Madhya Pradesh, was what is lagging. I heard from doctor कि सर ड्राई फ्रूट्स की जो फ्रेशनेस है वो 90 डेज रहती है. अब ड्राई फ्रूट की फ्रेशनेस अगर 90 डेज रहती है, एंड मेरे अलावा और जो डीलर्स हैं, they are just selling in dry fruits more than 90 days, sir. 100%. What they do, they just take the material in the bulk because they are having money, crores of money. I don't have money to they don't think startup, they just do business. What they do, just take the dry fruits and they just put in the cold storage. Can you ask the question? Yeah. So my question is, sir, it's been 2 years. My company is going good. Veer Nutrition. I have merged dry fruits with the nutrition because लोगों के पेट में पहुंचने तक की freshness below 90 days रहना चाहिए. That is my concept. So currently I'm working in Sagar itself, and before lockdown I was in Mumbai. So I want to switch that business model to Mumbai so that I can capitalize myself. I can explore much better. And it was just a startup, so how can I do that? Yeah, how can I capitalize my startup in Mumbai, and how can I get fund to start it in Mumbai? जनाब, आपका स्टार्टअप कहीं भी हो, वो ज्योग्राफी इज नॉट रेलेवेंट एनीमोर कि आप सागर में हो या जबलपुर में हो या मुंबई में हो. अगर आपके बिजनेस में प्रॉमिस है, स्केलेबिलिटी है, मैं इनकरेज आपको ये करूँगा कि आप अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स से कनेक्ट कीजिए, ईमेल के थ्रू कनेक्ट कीजिए, फ़ोन पे कनेक्ट कीजिए, और अगर आपके बिजनेस में दम है तो आपको वहीं से इंटरेस्ट मिल जाएगा. आपको बॉम्बे जाने की ज़रूरत नहीं है. इनफैक्ट मैं आपको इनकरेज ये करूँगा कि अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो आप बॉम्बे जाके अपना कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन 5 गुना बढ़ाइए मत. आपने सुना भी इन्वेस्टर्स से, बॉम्बे बहुत महंगी जगह है यार, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट, और मारामारी बहुत है. आप यहाँ इतना बढ़िया वातावरण है, मौसम, यहीं रहो यार, ठीक है. मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से लिंक्डइन पे ब्लॉगिंग कीजिए, ट्विटर पे अपने बिजनेस की पर्सनैलिटी बनाइए, थोड़ी डिजिटल मार्केटिंग कीजिए ताकि इन्वेस्टर्स को आपके बारे में पता लगे. उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. सोशल मीडिया जो एक्सपर्ट्स हैं उनको हायर करिए या किसी कंपनी को हायर करिए,
और अपना प्रेजेंस बना के अपने आप आपको इन्वेस्टर मिल जाएंगे। अजय सर ने बहुत सही बताया, धंधे पे ध्यान दीजिए, इन्वेस्टर अपने आप आपके दरवाजे पे चले आएंगे। बट you've gone to a better place, वापस काहे जाते हो, दिल्ली आ जाओ। Okay, I think we can have maybe 1 or 2 more questions maximum. That So- lady's been waiting for the longest time here. Please carry on. Yeah, please. Thank you very much. Actually, I do have a question कि मैंने अभी तक जितने भी I have seen ना question answers, तो जितने भी startup है, they are more into product based, you know, so they are coming up with different strategies and idea. The one like me, those who want to start, already I do have my consulting firm actually. We are providing staffing services to specifically to IT companies right now, like Ampetus, Tech Mahindra, Yesh Technologies, ENY. So, but basically I am asking is कि जब service based है already, the companies are also doing the same thing, you know. Everybody requires manpower. जितने भी startups are, everybody will be requiring manpower in the coming times. So, like Tech Mahindra, some of the projects that also take from Google and give the, you know, candidates to Google. They are working on Tech Mahindra payroll. So जो third party payroll है, even that is the thing I do have. We are not different from you know other companies in the same thing. तो इस केस में हम लोग फंडिंग का क्या करेंगे और स्ट्रैटेजीज कैसे डिफरेंट करेंगे? लाइक वी आर वेरी क्लियर कि आपका क्वेश्चन बताइए। मेरा क्वेश्चन ये है कि देखो जितनी भी स्टाफिंग कंपनीज होती हैं वो लोग 2 चीजों पे काम करती हैं। एक परमानेंट स्टाफिंग, एक बार मैंने आपको कैंडिडेट दिया, आपने मुझे उसका फी पे किया, आई एम फ्री एंड यू आर ऑल्सो फ्री। सेकेंड थिंग होती है कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफिंग। कोई भी कैंडिडेट है मेरे पेरोल पे है, मैंने उसे हायर किया, काम वो HCL के लिए कर रहा है, ठीक है, थर्ड पार्टी पेरोल जेन्युइनली होता है। ये 2 स्टाफिंग कंपनीज है, 2 स्टाफिंग जो क्राइटेरिया जो सभी ऑलमोस्ट स्टाफिंग कंपनीज करती हैं, ये 2 सर्विसेज पे काम। हम लोग इसमें डिफरेंशिएट इसे कैसे करेंगे और फंडिंग के लिए फिर हम लोग इसे कैसे आगे इनिशिएट कर सकते हैं? मींस प्रोडक्ट में तो हम लोग सोच सकते हैं कि ठीक है कुछ डिफरेंट आइडिया है, कुछ डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन सर्विस में क्या डिफरेंट कर सकते हैं हम लोग ऐसे? I'll take it. So, आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा गिग वर्कफोर्स का, गिग वर्कफोर्स, राइट? तो आप अपने प्लेटफॉर्म को गिग वर्कफोर्स की तरफ लेके जाओ और उसको एक्सप्लोर करो. That can give you efficiency, candidates, your customers, efficiency and more diversity that they can get. And hopefully, अगर वो pivot हो गया, तो आपको investor भी मिलेंगे. I'll take one question from the back. Some yeah. Yes, you with the jacket. Yeah, please. Yeah. Hi. My name is Harsh, and actually I wanted to ask about a more generalized problem. Right now, the startup ecosystem in India is kind of exclusive. Like a person coming, now the people right here do not even represent like 5% of the actual people that are there in India, right? I am very specific about the social backgrounds. If a person is coming from, I'm not talking about tier 1, tier 2, tier 3, like sir said, that they have to work thrice as harder, and people from tier 1 cities with good connection, they don't have to work at all, right? It is because they actually don't have to do all that, because they have already been groomed from the starting, like from the schools, from colleges, they have networks, their colleagues are already in good places, right? But people who are coming from very small places, studying in a college in a town like Indore, they don't have such kind of connections from, starting. So these people have no idea what an IPR is. These people have no idea what is financing, nothing at all. So what is the question? The question is how do these people get exposure that they have been, denied of till now? Boss, look, I'll just repeat from my side and then I'll hand over to my other panelists what I said to the gentleman over here. यार एक तो मेरे ख्याल से यहाँ कोई एक इम्प्रेशन बन गया है कि दिल्ली में सब पिकनिक मना रहे हैं, ऐसी बात नहीं है. हम लोग भी थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं यार. I think I'll speak for all my tier 1 colleagues who are on the panel. ऐसी बात नहीं है कि हम लोग काम नहीं करते. But I think the point Ajay sir was making was that there is a greater degree of hunger coming from a smaller town, which I fully subscribe to. But on a serious note, see यार, again I'll tell you, ये एक misconception है कि आपको एक बड़े शहर से ही आना है तभी आपके नेटवर्क बन सकते हैं. I had the privilege, and I'm sure some of my other panelists, of having been to educational institutions which are of what you would call the privilege
टॉप IIT हुआ, या मैं तो नहीं गया था IIT, SRCC जरूर गया था, IIM बैंगलोर गया था. More than 60-70% of my batchmates were from smaller towns. ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि बड़े शहर के लोग ही आगे बढ़ सकते हैं. आप कोई भी, आप यहाँ पे आपके IIT IIM दोनों आप जाइए, आप, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी या शायद मेजॉरिटी लोग अलग अलग शहरों के होंगे, अलग अलग बैकग्राउंड के होंगे. तो ये माइंडसेट मत, इसमें विक्टिम माइंडसेट में मत जाओ यार कि हम इंदौर से हैं तो हमारे पास कनेक्टिविटी नहीं. सबके पास कनेक्टिविटी है. क्वेश्चन है अब अपना ब्रांड कैसे बनाएंगे. तो मैं यही बता सकता हूं जो मैंने किया. मैं इंडिया आया था 2010 में, 10-12 साल बाहर रहने के बाद, और जब मैंने यहाँ पे एक कंपनी की ब्रांच शुरू करी है, ITC करके रिसर्च कंपनी है, मुझे कोई नहीं जानता था. मैं एक अंग्रेज दिखता हुआ, अंग्रेजी बोलता हुआ बंदा हूँ, मुझे कोई नहीं जानता था. लेकिन मैंने मेहनत करके अपनी थॉट्स को ब्लॉगिंग करके, लिंक्डइन पे बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे, अखबारों में आर्टिकल्स लिखे, और धीरे धीरे अपनी एक खुद की ब्रांड बनाई. मैं अपनी टीम वालों को कहता था 40 डिग्री में भी दिल्ली में जब क्लाइंट के यहाँ जाके मिलते थे हम लोग, तो कोट पहन के जाओ, क्योंकि जो अपना ब्रांड है वो अपना ब्रांड है. मैं आपको भी यही कहूँगा, आज की तारीख में यार इतने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, आप वहाँ पे अपने ब्रांड बनाइए, अपना थॉट लीडरशिप आगे करिए, आप अपने वहाँ पे नेटवर्क्स बनाइए. उसी से आपको एक एक्सेस मिलेगा जिसके लिए कोई दिल्ली या बम्बई की जरूरत नहीं है. इंदौर भी बहुत रिस्पेक्टेड शहर है. मैं आपको बता सकता हूँ, दिल्ली में हर एक आदमी इंदौर को जानता है, राइट. और जो नहीं जानता है, मैं उनको यही कहता हूँ कि एक बार आओ और 56 दुकान का पोहा खाओ तो सब कुछ याद आ जाएगा, राइट. ठीक है, मेरी तो फेवरेट है जी, मैं तो बार बार इसलिए बोलता हूँ, राइट. तो ऑन अ सीरियस नोट, ये इस माइंडसेट में आप बिल्कुल मत रहिए. मैं आप सबको यही कहूँगा, इस माइंडसेट में बिल्कुल मत रहिए कि एक बड़े शहर में ही नेटवर्क्स बन सकते हैं. आप डिजिटली और वर्चुअली, और स्पेशली कोविड के बाद सबने देखा कि पूरी दुनिया डिजिटल पे पिवट मार गई, राइट. और ये जो डिजिटल पिवट है, रिवर्स नहीं होने वाला, ठीक है. एक हाइब्रिड दुनिया रहेगी. ये फिजिकल कॉन्फ्रेंस है, लेकिन ये भी एक, इसकी भी एक डिजिटल परछाई इंटरनेट पे है अभी, राइट. तो आप प्लीज उस पर फोकस करिए और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़िए. बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत मौके आपके लिए भी. दिस इज माई 2 bits, सर. Okay, Actually, just to add one quick point, HCL came out of Jabalpur in 1976. मेरा क्या connections थे बताइए. एस्टोनिया कंट्री को जानते हैं आप? किधर है वो? यूरोप में सर. हाँ, स्काइप वहां से आया था 20 साल पहले. Nobody knew एस्टोनिया, nobody knew स्काइप. इसके बारे में सोचिए यार. Even just to add what sir said, I come from insurance fraternity. वर्ल्ड की जितनी बड़ी कंपनियां हैं इंश्योरेंस में, वो न्यूयॉर्क से नहीं आई हैं. साउथ अफ्रीका की बड़ी कंपनी जो हमारा पार्टनर है, दे हैव नॉट कम फ्रॉम जॉन्सबर्ग, दे हैव कम फ्रॉम केप टाउन, जो छोटी सिटी है कंपेयर टू जोबर्ग. लंदन से कम इंश्योरेंस कंपनीज आई हैं, बट एडिनबर्ग से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनीज आई हैं. तो छोटे शहर में, और इंटरनेट ने छोटे बड़े की सब दूरी खत्म कर दी है. आपकी ब्रांड है, आपके आइडिया में दम है, आपके प्रोडक्ट में दम है, आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, और आपकी सक्सेस स्टोरी है जो कि आप लिंक्डइन, ढेरों प्लेटफॉर्म्स हैं. पीपल विल कम, इन्वेस्टर्स विल कम एंड रनिंग टू यू. दैट्स व्हाट इज, आई थिंक, द एसेंस ऑफ द होल answers which all our speakers are giving. Just to add on to what Manoj said, look, when I get a product, when I get a pitch, I don't look at it from which city it has come. I look at it if it fits my thesis or not, and then I respond. Great. So I'm so sorry. I think we run out of time. I have a small question, sir. Direct question. Just small one. I'm really sorry. I think people are hungry. The lunch is waiting. So we'll be available. We are all around, and I think I've been already warned about time. I'll be just direct and quick. Thank you so much, sir. Sir, recently I've seen many startups who have started 5 or 10 years ago. They are just getting their IPOs. So just my quick question: is the IPO a really end game for the startup? After that, क्या IPO के बाद क्या कोई भी startup IPO लेके आता है? And I am also hearing कि अभी मामाअर्थ भी अपना IPO लेके आने वाला है. So what I've seen is कि हर स्टार्टअप जो स्टार्ट हो रहा है वो एक एंड गेम में IPO ही लेके आ रहा है. तो IPO 25 साल पहले हुआ था, अब भी चल रही कंपनी.
right, sir? But IPO is a way for public to participate in a right, company's right. success and for early investors to get an exit. Okay. और कुछ नहीं IPO. अगर LIC का IPO आ रहा है तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है कीजिए, you want to participate in their success. Right, right. But any of the IPOs which have come, old people like us who have invested early, we get an exit opportunity, and retail investor may or may not want to invest. कोई तो कनपट्टी पे बंदूक नहीं रख रहा. Right, right. Right? तो बस ये तो इसमें end game की कोई बात नहीं है. IPO is a milestone. Like a Series A funding is a milestone or an angel funding is a milestone. IPO is also a milestone. Company चलती है उसके बाद यार, और चलनी भी चाहिए. Okay, I think I'm so sorry. I know that lots of people have questions, but we'll have to end this session. Thank you so much, each of the panelists here. Really great to have you all here, and thanks a lot for the audience. Thanks to the government of Madhya Pradesh and the Startup India and everybody in the organizing team. Really appreciate all the hard work you guys have done. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you to all our esteemed guests. Thank you to all the speakers and